Hello, everyone, and thank you so much for joining us today for this very, very important seminar on how to prepare a case given by Mr. Minam Karim. Just by way of introduction, Mr. Minam Karim is a senior associate at Via Barker Gillette in Pakistan and is based out of its Lahore office. He specializes in transactional and corporate work and has extensive experience in working on federal and provincial government projects, including public-private partnerships. He also specializes in arbitrations and constitutional, commercial, and civil litigation, and has regularly appeared before civil courts, tribunals, and the High Courts of Pakistan. Thank you so much for joining us, Minam, and I'm going to hand over to you now. Thank you, Aisha. Assalamu everyone. अब एक केस तैयार करने के लिए ऐसा कोई एक चीट नहीं है या तो इट्स नॉट समथिंग जो मैं एक घंटे में ऐसा समझा सकता हूँ. what I can do is जो मैंने अपने 10 प्लस साल में जो सीखा है, मैं उसको एक समराइज करने की कोशिश कर सकता हूँ कि and give some pointers कि what you can look out for, what are the general guidelines कि अपना केस कैसे तैयार करना है. So obviously ये एक exhaustive exercise नहीं है, and this is something that people are still learning. अब मैं भी अभी तक I still think that I am still learning how to prepare a case and just practice law in general. So it's something that you constantly learn. और also हर law firm की अपनी एक तरीका होता है practice करने का, and यूजुअली हर एक एसोसिएट ये जो भी लॉयर ज्वाइन करता है लॉ फर्म को, उसने उस एक स्टाइल को अडॉप्ट करना होता है अपने हिसाब से. लॉ फर्म्स की बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स होते हैं वर्किंग के लिए. वर्क एथिक उनका काफी डिफरेंट होता है, तो उसको अडॉप्ट करना कभी कभार काफी मुश्किल हो जाता है. बट दैट बीइंग सेड, मैं अपनी तरफ से एक जो गाइडलाइंस दे सकता हूँ, जो पॉइंटर्स हैं जो मैंने सीखा है एंड व्हिच आई थिंक इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग अ केस, आपको मैं बता देता हूँ. अच्छा, इन माय ओपिनियन प्रिपेयरिंग अ केस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. 3 phases में हम करते हैं. A lot goes in before you appear before a judge. और जिस तरह का जज भी होता है उसके हिसाब से भी उसकी प्रेपरेशन डिफरेंट होती है. 3 phases हैं. First is what I call the factual phase, where आप क्लाइंट से engage करना, because client ही ज्यादा आपको सारी factual information provide किएगा. तो how to extract all the relevant information from the client is the first phase, and वो भी एक अपनी एक art है. But a lot of people don't take that seriously in Pakistan and the service industry in general in Pakistan. दूसरा phase है the lawyering phase, where once you get all the facts, अपनी preparation करना, drafting, preparing your legal arguments, and just generally understanding what your case is going to be moving forward. That's the second phase. और तीसरा phase है arguments, जो actually एक कोर्ट के सामने आप प्रिपेयर करके जाएंगे और किस तरीके से बात करना होता है डिपेंडिंग ऑन द जज और फोरम, उसका भी अपना ही आर्ट है. अ लॉट ऑफ टाइम्स ये पहले 2 phases लोग इग्नोर कर लेते हैं. लॉ फर्म्स में वो ज्यादा उस पर एम्फोसिस नहीं देते. आई थिंक फॉर यंग लॉयर्स जिनका इतना नाम नहीं है, जो उनके और जिनकी इतनी नेम रिकग्निशन नहीं है फैमिली की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट 2 phases पे जो फोकस करे, that we should be focusing on the first 2 phases. अब मैं each phase से जाऊंगा, moving up to the arguments phase. अच्छा, anyone can ask questions at any point in time. Just raise your hand or the moderator will आपको बता देंगे कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं. So question is not going to be at the end. आप कभी भी आप मुझे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल. Okay, so let's take this as a one story and the entire preparing the case from the beginning to the end.
तो लेट्स जस्ट से आप एक लॉयर बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज कि ए क्लाइंट विल कांटेक्ट यू कि प्लीज मुझे आपसे एक मीटिंग करनी है, एंड वो समझा देंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इशू, एक समरी दे देंगे कि क्या है। फॉर एग्जांपल कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है, या तो मेरा एयरलाइन ने मेरा बैग गुमा दिया है, या तो आई वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन और समवन हैज वायलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल वो कुछ बता देंगे। सॉरी, वो am I supposed to be the one who admits people? No, no, please carry on. Anyways, We just made you co-host. Please carry on. ओके ओके सो आप एक क्लाइंट ने आपसे कम्युनिकेट कर लिया, एक समरी दे दिया कि लॉयर साहब आपसे मैंने मिलना है, ये आप किसी ने आपको रेफर किया है और प्लीज मुझसे मिलना है। सो जनरली एट दिस पॉइंट इन टाइम उसने आपको कुछ बता दिया होगा कि ये किस केस के बाद ये है मेरे को इश्यूज। इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि बिफोर द मीटिंग आप जितनी रिसर्च कर सकते हैं इस चीज के बारे वो आप कर लें जो इश्यू आपको प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोला है कि मेरे बच्चे को उसने बता दिया ओवरऑल एक समरी दे दी होगी 2-3 लाइनों की कि किस वजह से डाला है, वो ने स्कूल फीस नहीं दी, वो मैंने कोई यूनिफॉर्म नहीं सही तरह से पहना, मतलब बच्चे ने समथिंग लाइक दैट। तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लें। ऑब्वियसली यू डोंट नो द एंटायर इशू, बट जनरली डू सम फैक्चुअल रिसर्च, रीड अप द न्यूज़ कि आजकल क्या कोई ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिकॉज यू नीड टू बी a little bit prepared before talking to the client, ताकि आपको बिल्कुल ही ना doesn't catch you off guard, और या तो आपको ये उसी वक्त भी थोड़ा सा कुछ informed उसे you can give him some informed advice as well, preliminary advice. So let's just take this one example कि वो schools का एक issue है या तो airlines का भी issue है। तो you do some research and you try to find out कि आजकल किस तरह के issues आ रहे हैं and what this might be related to. And also if you're not familiar with the law around that issue, and then तो उसकी भी आप research कर लें। Once now this is all before the client meets you. Now it's very important, especially हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री में जो काफी टेकन फॉर ग्रांटेड ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं कि एक तो होता है ऑब्वियसली कि हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू स्पीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई काफी लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली एक सर्विस इंडस्ट्री में जिसमें you're trying to make a name for yourself and you want to bring in clients, जो एक दूसरे को रेफर, एंड यूजुअली एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही रेफरल होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट दैट वेरी गुड फर्स्ट इंप्रेशन। नाउ apart from how you talk, how you look, sorry, how will you engage them? So the client needs to be able to trust you। जब तक वो आप पे भरोसा नहीं करेगा वो आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, and it is very important that all the relevant information is extracted from the client। आपने उसकी बात आराम से सुननी है, take notes, be very very attentive and let them complete, try not to interrupt what they're saying, पूरे उनकी कहानी सुनाने दें कि क्या हुआ था। A lot of times what happens is कि I'm not just talking about lawyers, like I said, the service industry in general, वो इंटरप्ट करते नहीं 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 एक्चुअली समझ आ गई है आपको ये इशू है। और लॉट ऑफ टाइम्स ये डॉक्टर्स करते हैं, अच्छा आपने क्या कहते हैं गला में मसला है ये एंटीबायोटिक ले लें, अच्छा ये थोड़ा सा आपको शोल्डर पे दर्द है, ये दवाई ले लें। सेम थिंग विद लॉयर्स, अच्छा ये मसला है, आप बस केस फाइल करें हम आपके साथ हैं। And what that happens is if the client already trusts you, so you can end up making a bad decision or an uninformed decision, and that can backfire very badly for you। तो आप आराम से सुने, do not
कम अक्रॉस एज कॉन्डिसेंडिंग या कि मुझे ज्यादा पता है आपसे। वो ऑब्वियसली एक वकील नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि ऑन दिस इज जस्ट अबाउट फैक्ट्स। आप उससे सब कुछ वो फैक्चुअली उससे लें, उसकी आराम से बात सुने एंड टेक नोट्स। इफ उनको ये अगर ये फीलिंग आएगी कि हम तो बहुत बेवकूफ हैं, हमें तो नहीं पता, वकील को ही बेहतर पता है, they will be less likely to give you more information, and that is very important that you do not let that happen. And आपने सब कुछ इंफॉर्मेशन सुने, आराम से सुने, टेक नोट्स। हाँ, and then once they've completed, you might have questions. Always ask questions at the end, follow-up questions, and tend to repeat the facts that they've said, and then ask a follow-up question. And do not hesitate to ask as many questions. जितने भी सवाल पूछ सकते हैं उनसे आप जरूर पूछें। काफी दफा ये परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि अगर आप ज्यादा सवाल पूछें इसका मतलब है आप बेवकूफ हैं। ये बिल्कुल नहीं आपने करना। इनफैक्ट द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, तो एक क्लाइंट के दिमाग में इंप्रेशन आती है कि अच्छा ये मेरी बात सुन रहा था, ये अटेंशन पे कर रहा था, ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन माय केस, ही और शी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन माय केस। तो इन माय एक्सपीरियंस सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, और जितने भी सवाल पूछते हैं पूछें। वंस दैट इज डन, वो काफी दफा हाँ एक होता है कि क्लाइंट्स एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी एक एयरलाइन ने आपका बैग, एक क्लाइंट का बैग घुमा दिया, वो कहेंगे नहीं देखे ना, वो ऐसे में ये एयरलाइन है भी इस मुल्क की, वो होते ही ऐसे इस तरह के लोग हैं, वो करप्ट होते हैं, उन्हें मुझे एयर होस्टेस ने भी बहुत बुरे तरीके से देखा था, थिंग्स लाइक दैट। आप आराम से बात से बोले हाँ देखिए, एक्चुअली हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, बैगेज पे, आपने क्या लेकर गया था, आपके पास कोई रिसीट्स हैं कि आपने आपकी जो बैग में आइटम्स थे उनके हैं। मूव द कॉन्वर्सेशन देयर, ट्राई नॉट टू बी कौन से नहीं नहीं आपको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, ये आप बहुत इरेलीवेंट बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं से, लेकिन हमें इस पे फोकस करना चाहिए। आप ये बता सकते हैं कि आपने आपके पास अ, क्या एविडेंस थी कि जो आपके साथ हुआ है, वो आप प्लीज बताएं। हाँ, ऑलवेज ट्राई टू गेट एज मच डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन एज कैन, बिकॉज आखिर में एक केस उतना ही स्ट्रांग होता है जितना आप प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव एविडेंस, फॉर एग्जांपल इफ इट्स एन ट्रायल, तो आपको एविडेंस बहुत जरूरी है। तो आपने वो कहेंगे नहीं 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 आप मुझ पे भरोसा करें, कहते हैं हाँ आपके साथ आप पे बिल्कुल भरोसा करते हैं, मैं मगर मुझे तो नहीं आप कन्विंस करने की कोशिश करना, हम तो कोर्ट कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, मगर कोर्ट को समझाने के लिए हमें ये कुछ चीजें चाहिए होंगी, या आपकी बेहतरी के लिए कि आप हमें ये सब कुछ प्रोवाइड कर दें, वरना ये कोर्ट में जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा। थिंग्स लाइक दैट, ट्राई टू यूज लेमैन लैंग्वेज, ट्राई टू यूज सिंपल लैंग्वेज, कि ये कुछ हम नहीं कर पाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। व्हाट दिस डज इज कि एक क्लाइंट कहेगा हाँ हाँ ठीक है, ये मेरी बात सुन रहा है, ये तमीज से समझ रहा है, और ये मैं ऐसे सब कुछ प्रोवाइड करूंगी। ऑल्सो नेवर इन ऑल ऑफ दिस, और आई नो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज लगती है कहने की, बट नेवर गिव एन अनफाउंडेड ओपिनियन और ओवरस्टेट योर चांसेस ऑफ सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल कहेंगे हाँ हाँ आप बस फाइल करें, बस बिस्मिल्लाह करें, हम जीतेंगे जीतेंगे। जितना भी एक तो मैंने जो एक सबक सीखा है कि जितना भी स्ट्रॉन्ग केस हो एविडेंस या कानून में, देर इज नो चांस, देर इज नो 100% चांस ऑफ सक्सेस, कुछ ना कुछ हो जाता है, जज का मूड फर्क होता है, दूसरे लॉयर ने कोई और टेक्निक बीच में डाली होती है। तो हम हर वक्त कहते हैं, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस, हम कहते हैं यू हैव अ गुड केस, आपके पास अच्छा केस है, चांस, देयर इज अ लाइकली चांस कि हम सक्सीड करेंगे, मगर मैं गारंटी नहीं दे सकता।
काफी दफा कहते हैं लोग कि अच्छा आप नहीं गारंटी दे सकते तो हम एक और वकील के पास चले जाते हैं जो हमें गारंटी दे सकता है। तो एट दैट पॉइंट यू कैन बी लाइक हाँ आप बिल्कुल आपकी मर्जी है, मगर यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम कि देखें कुछ लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जिताने के लिए या तो आपको अपना हक दिलाने के लिए, बट हम गारंटी नहीं कर सकते। और मैं आपसे डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहता, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाह रहा हूँ कि जब भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर मेरे एक्सपीरियंस में एंड ये सच बात है, कुछ भी हो सकता है कोर्ट में। और ये तो वैसे ही कोर्ट पहुंचने से पहले भी कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि वो सेटलमेंट करने की कोशिश करें, वो केस को आगे लटकाने की कोशिश करें, कुछ भी हो सकता है, हम अपनी पूरी कोशिश करें। I personally think it's very good to be honest, and it creates a reputation in the market कि आप एक सीधे साधे इंसान हैं, आप एक तमीज़ा तरीके से बोलते हैं और आप सच बोलते हैं। What it does is कि अगर ये क्लाइंट शायद ना मिले, there'll be so many plenty of other clients जो आपको ज़रूर जो आपके उनके रेफरल से शायद आपको मिल जाए। So I think as a general practice, you should adopt this when dealing with the client. And वैसे भी लेट्स जस्ट से कि आप कह भी दें कि हाँ गारंटीड सक्सेस है, एंड आप कहते हैं बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट, बेस्ड ऑन लॉ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, आपके पास एक क्लियर कट केस है, मगर आखिर में आप हार जाते हैं, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन कि जज डिसऑनेस्ट था, दूसरी साइड ने कुछ गड़बड़ की थी, क्लाइंट आपसे पूछेगा। क्लाइंट इतना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि नहीं देखिए ना वो जज ऐसी ऐसी था, दूसरा वकील बहुत करप्ट था, ये बहुत बड़े नाम का था, उसने आपसे इंगेज किया है एंड वो आपसे ही जवाब देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को भी रेपुटेशन वाइज प्रोटेक्ट कर लें कि मैं देखें मैंने आपको समझाया था, ये चांसेस आपके हाई हैं, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू engage with the client that way। अब आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, अब नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द केस, द फेज 2। इसके अंदर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, केस प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कम अक्रॉस अ पॉइंट कि अच्छा एक्चुअली आई नीड टू नो दिस एज वेल in order to have a successful to win in this case। Always ask follow-up questions. For two obvious reasons. One, you need to have all the relevant information with you, and second, वो क्लाइंट को लगेगा जैसे आप अभी तक इंगेज हैं और आपने उससे भूले नहीं। काफी एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है मार्केट में कि हमने वकील को दे दिया है, उसने हमारे बारे में भूल गया है, वो बस तारीख ले रहा है और आज अब वो हमारे बारे में भूल गया। सो इट्स गुड आप इंगेज्ड हैं। तो एंड ऑल्सो के इट्स गुड एज अ गुड प्रैक्टिस, आई थिंक कि आप क्लाइंट को खुद से भी रेगुलरली अपडेट करते हैं, देखिए हमने इतना कर लिया है काम, हम ये कर रहे हैं, ये हमारी प्रोग्रेस है, हम इस स्टेट पे हम मोस्ट लाइकली केस फाइल कर सकते हैं बाय योरसेल्फ विदाउट बीइंग प्रॉम्प्टेड। बिकॉज अगर क्लाइंट खुद आपको चेस अप कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे कि आपकी इसकी तैयारी पहुंची है, it kind of creates a bad impression। So कोई भी not just as a lawyer but as anyone in the service industry, I think it's good कि आप पेश रखें और उनको एक इम्प्रेशन क्रिएट किया कि आप उनके केस में बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप फुली उससे प्रिपेयर करें, एंड दैट वो रिलैक्स कर लें, अब वो आपके हाथों में है। अगर मुझे वकील को चाहिए, वो मुझे खुद पूछ लेगा। आई थिंक दिस रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड काफी दफा इसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि आप इन स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री आप उसी के पास वापस जाएंगे जिससे आप भरोसा करते हैं। इन माई एक्सपीरियंस some of the most successful lawyers in Pakistan have
very good relationships with their personal relationships with their clients, कि जो कुछ भी हो जाए वो कहेंगे हमने इसी के पास जाना है, इसी वकील के पास जाना है। तो आई थिंक एज यंग लॉयर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की रिलेशनशिप्स डेवलप शुरू में ही करना शुरू हो जाए, और एटलीस्ट आपकी एक रेपुटेशन बन जाए कि हाँ, ये वकील ना हमारी हर बात को सुनता है और हमारे केस को इंटरेस्टिंगली फॉलो अप करता है। अच्छा, अब ये होगी फैक्चुअल बात। नाउ वी कम टू द एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ द केस। It's always important, apart from the obvious thing, looking up the law, relying on official. I mean, I'm quickly go over this. I think most of law students already know this. Looking up official text of the law, यानी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आपकी अवेलेबल होती हैं टेक्स्ट ऑफ द लॉ। केस लॉ भी अगर देख रहे हैं तो अपने हेड नोट्स को नहीं देखना, you have to look at the main text of the case. Once you research the law, you should build a narrative in your head. अब आपके पास facts आ गए हैं, आपके पास आ गए हैं law. It's important कि अब आप एक narrative बनाएं अपने दिमाग कि this is what I want to argue before the court. As you grow in the practice, this will become second nature to you. आपको ये few seconds लगेंगे, मगर बहुत जरूरी होता है शुरू के प्रैक्टिस में कि आप इस पे एक पूरा एक मेंटल एक्सरसाइज जरूर करें, कि आप एक नैरेटिव बनाएं। नाउ once that is done, you start making skeleton arguments for yourself, एक बुलेट पॉइंट्स में कि ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एंड after getting out all the arguments in your mind, अब फिर उनको अरेंज करने की कोशिश करें। ज्यादा वक्त उसमें लगता है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को, आर्ग्यूमेंट्स को रीअरेंज करें कि अच्छा ये पहले आनी चाहिए, ये बाद में आनी चाहिए। इन ड्राफ्टिंग द एक्चुअल प्लीडिंग्स बहुत जरूरी है कि आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन में ना जाए, और जो आपके फैक्ट्स और आपकी जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से आप बंडल करें। काफी दफा मैंने देखा है पाकिस्तानी प्लीडिंग्स में वो लंबी कहानियां लिख देते हैं और इतनी लंबी वो प्लीडिंग्स बन जाती हैं जो जज भी नहीं सही तरह से पढ़ते, बिकॉज दे फील लाइक a lot of this is just rhetorical rhetoric, या तो them just saying irrelevant things just to make themselves look better. It's very important, regardless of whichever proceedings, which stage of the sorry which court you're going to, कि आप अपना रिकॉर्ड मुकम्मल करें। काफी दफा ये होता है कि अगर किसी ने सिविल कोर्ट में केस शुरू करना है, वो कहते हैं नहीं, ये सिविल कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई कोर्ट में अपील में हम देख लेंगे। आई मगर मसला ये होता है कि जो फर्स्ट कोर्ट होती है, दैट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, उसके अंदर सारा आपका रिकॉर्ड मुकम्मल होना चाहिए, एंड बिकॉज उसी के बेसिस में सारी केस आगे चलेगी। सो योर प्लीडिंग्स, योर डॉक्यूमेंटेशन should be in order from the get. आप केस को जितना, अगर आप फील करते हैं कि अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है मगर क्लाइंट बहुत जल्दी में, आई वुड ऑलवेज से होल्ड ऑन। बोले क्लाइंट को समझाएं, देखिए हमें डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, ये एक फैक्चुअल थिंग मिसिंग है, ये मैं इसके बगैर नहीं जा सकता। इट्स बेटर टू लूज अ क्लाइंट देन टू लूज फेस इन कोर्ट, कि आप कोर्ट में आपको झाड़ें पड़ रही हैं कि ये आपके पास नहीं है, आप जब आपको पता भी है कि आपको ये जरूरी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो इफ यू फील लाइक एक लूप होल है आपके इंटायर केस में जो आपने सही तरह से अभी एड्रेस नहीं किया। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप क्लाइंट को समझा दें, यस मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले हफ्ते में केस फाइल करूंगा, ये इश्यूज आ गए, तो ये आपके फायदे में है कि हम अभी ये केस ना फाइल करें, या तो ये डॉक्यूमेंट अभी ही इंक्लूड कर दें रिकॉर्ड में। व्हाट हैपेंस इज कि काफी दफा ट्रायल कोर्ट जो जहाँ सारी एविडेंस कलेक्ट होती है,
वो जब आगे जब अपील्स में जाते हैं, वो जो एक लेट्स से एक ऑन अ हायर लेवल ज्यादा कोई कॉम्पिटेंट जज होता है, वो पढ़ता है कि एक्चुअली ये आपने नहीं कहा, तो यू कांट इंक्लूड न्यू डॉक्यूमेंटेशन एट एन एपेलेट स्टेज अंडर सर्टेन एक्सेप्ट अंडर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो बहुत जरूरी है कि शुरू से ही आपका केस में सारी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों। अब आपने पूरा आपने केस तैयार कर लिया है, इवन इफ यू थिंक अब बेस्ट है, इन माय ओपिनियन मुझे और कुछ चीज हुई नहीं है, ऑलवेज शेयर अ ड्राफ्ट, जो अगर कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, लीगल ओपिनियन भी हो, या तो एक प्लीडिंग्स हो, एक फर्स्ट ड्राफ्ट जरूर क्लाइंट के साथ शेयर करें। काफी दफा मैंने देखा है लॉ फर्म्स इन पाकिस्तान, वो सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए बोल देते हैं कि आप बस आ जाएं, साइन कर दें, हम आपने जो भी बोला हम वही डाला है, एंड वो फाइल कर लेते हैं, एंड द क्लाइंट हैज नो आइडिया कि आपने लिखा है। सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप जरूर क्लाइंट के साथ शेयर करें अपनी केस, जो केस प्रिपेयर किया है, जो प्लीडिंग्स प्रिपेयर किए हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, और उनसे जरूर मांगे उनका इनपुट। ये एंड से कि अगर प्लीज एक एम्फसाइज करें कि हर लाइन आराम से पढ़ें, और इस ट्राई टू समझने की कोशिश करें कि किया क्या, और अगर मैंने कोई गलती की है या तो मिस रिप्रेजेंट किया, या तो अगर आपको बात समझ नहीं आ रही, प्लीज मुझे बताएं। ये एक टाइम रखना चाहिए, ये बैक एंड फोर्थ क्लाइंट के साथ, ताकि एक तो क्लाइंट इज अवेयर, और एक और रीजन की वजह से अगर क्लाइंट बाद में ये नहीं कहता ये तो नहीं मैंने बोला था आप डालने को, तो एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड आपने क्लाइंट को जरूर बताया होगा, देखिए ये मैं केस फाइल करने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई कमेंट्स हैं या तो अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो अब भी जरूर बताएं, बाद में मुश्किल हो जाएगा चेंज करना, बिकॉज ये ऑफिशियल आपकी एक स्टेटमेंट बन जाएगी कोर्ट के सामने। तो ऑलवेज टेक टाइम आउट, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ टाइम कि आप क्लाइंट के साथ जरूर शेयर करें अपनी ड्राफ्ट, एंड बी ओपन टू द आइडिया कि इसके अंदर चेंजेस होंगे। अगर कोई क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछ लिया जो समझ नहीं आया, तो कहते हैं नहीं ये भी जरूर डालें, गिव इट प्रॉपर कंसिडरेशन। ये ना दिमाग में करें कि क्लाइंट कुछ पता ही नहीं है, ये इसको तो कानून का कुछ पता नहीं है, इसको प्लीडिंग्स का कुछ पता ही नहीं है, ये तो पहली दफा कोर्ट जा रहा है, मुझे नहीं पता। एक ओपन माइंड के साथ जरूर उसी कमेंट को देखें, कि काफी दफा हो सकता है कि आपने एक्चुअली कुछ चीज मिस की हो, स्पेशली हमारी उम्र में यंग लॉयर्स, वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न, एंड हमें ये इम्प्रेशन अपने आप को देना, क्लाइंट को नहीं देना चाहिए कि हम बहुत रिजिड हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सॉरी हमें सब कुछ पता है और आपको कुछ पता ही नहीं है और हम जस्ट बस जा रहे हैं। द क्लाइंट शुड फील इंक्लूडेड कि मुझे वो साथ साथ लेके जा रहा है। तो always give his or her comments important consideration, sorry, it's due consideration। वक्त है उनको समझाना, अगर आप समझते हैं कि एक्चुअली वो गलत कह रहा है, तो आप उसे समझाएं, और उसे एक पोलाइटली समझाएं कि लोग दिस इज नॉट नेसेसरी, या तो ये आपके खिलाफ जा सकती है बात, बट टेक आउट टाइम टू share to get feedback from the client। अब right before the arguments जो phase 3 है, उसके अंदर you should try to prepare what we call a cheat sheet of your entire case। अब पूरा केस और उसके साथ जो annexes होंगी, documentation होगी, वो हर वक्त आप नहीं याद कर सकते, तो आप एक बुलेट पॉइंट्स की चीट शीट बना दें, इसके अंदर ये भी लिखा हो कि ये डॉक्यूमेंट इस पेज पे है और ये चीज यहाँ पड़ी हुई है, ताकि नो एवरीथिंग, all the facts and the law on the tip of your fingers, or and it should be there preferably in a one page summary। In my experience, काफी लोग कहते हैं कि एक स्पीकिंग स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, एक कोर्ट के सामने ओरेशन, ओरेटरी स्किल्स कैसे करते हैं। I personally think that
the best way to prepare for arguments is confident that you know the entire case inside out, the facts and the law. If you know the case word for word, आपके पास वो एक confidence आएगी, and that will help you speak. There is no skills, there's no trick to speaking well. If you know everything, you will automatically speak well. And this brings us to the argument, to actually the court phase, where you actually present your arguments. अब it depend करता है कि कौन से कोर्ट में हैं, because your style changes significantly depending on which is. अगर आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, वहां आपका कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच होगा. वहां एक आपको मोस्ट लाइकली एक जज मिलेगा जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो चुपचाप बैठा होएगा, और आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स उसे केस समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, एंड वो आपसे मोस्ट लाइकली एक या दो सवाल पूछेगा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट आपने किधर फाइल किया, अच्छा आपका प्रेयर किधर, आपने क्या मांगा हुआ है. So you'll have a very, for the lack of a better word, lazy and uninterested judge in the civil court. तो वहां आपकी अप्रोच काफी डिफरेंट होगी कि आपने इंगेज करना है जज को, एंड दैट इज व्हाई इन बोथ के, अभी मैं हाई कोर्ट में आऊंगा, देयर इज समथिंग आई कॉल द पिरामिड स्ट्रक्चर टू आर्गुमेंटेशन. कि आप बेसिकली यू स्टार्ट ऑफ विद ए वन पॉइंट. लेट्स से आपने योर केस इज कि वो इन दैट केस वो एयरलाइंस के आपकी बैग घुमा है. अच्छा, तो आपका यू स्टार्ट ऑफ विद द पॉइंट, जी हमारा केस है कि एक कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये क्लेम है उस एयरलाइन के खिलाफ कि उसने हमारा बैग घुमाया. देन यू स्लोली स्टार्ट बिल्डिंग अप मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन एज यू गो ऑन. अगर आप शुरू ही करेंगे एक पूरी तकरीर में के साथ लाइक एनी स्टोरी, देन यू लूज द जजेस इंटरेस्ट. एंड वो इन सिविल कोर्ट में तो आपको बहुत कोशिश करनी होती है एक जज के इंटरेस्ट में लेने, टू keep the judge interested or at least engaged in the case. तो आप उन्हें जितना समराइज कर सकते हैं आप करने की कोशिश करेंगे. As long as your record is there, you should have comfort in the fact कि अगर आप कोई डिटेल मिस भी कर लें, that's fine, as long as the judge knows कि मोटा मोटा आपका केस क्या है. तो for example in the consumer court you will be saying, देखें हमारा बैग घूम गया था, इस एयरलाइन ने घुमाया था. अच्छा, and then you come to law, हमारे इस सेक्शन के नीचे service provider is liable. अच्छा, and then you can be like, and these are the facts of the case, and that is why, and they clearly fall within this the ambit of the law. Okay, then you can also, then आगे you can, if the judge is still listening, you can give precedent कि देखें there is case law where similar situations an airline was held liable for damages for lost luggage, and ये हम आपको भी दे रहे हैं. So you start off with the least amount of the shortest form of summarized version of your case, and then you build up on it. And you can constantly say, make it easy for the judge saying, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं चाहूंगा, आप जो पूरी क्लेम्स जितना अमाउंट है, जितने हमारे आइटम्स होते हैं, उसके ये डॉक्यूमेंटेशन अटैच्ड है, ये नंबर आप बाद में देख लीजिएगा. एंड वी जस्ट ट्राई टू explain to the judge in the shortest amount of time possible कि ये आपका केस है. Obviously there are sometimes very complex cases that cannot be summarized that quickly, but you try your best कि जितना भी उसको सिंप्लीफाई कर लें, आप करने की कोशिश करें. They also try to, in the civil courts, try to not use too much flowery language. Okay, बहुत ही layman language इस्तेमाल करें ताकि जज की टेंशन इधर उधर ना चले. ही इज नॉट ट्राइंग टू थिंक कि अच्छा नहीं इस वर्ड का मीनिंग क्या है, अच्छा नहीं ये कानून का क्या. ही शुड जस्ट जनरली हैव एन आइडिया कि आप मांग रहे क्या है उनसे, और सॉरी आपका केस, आपकी ग्रीवेंस क्या है, और आप उनसे क्या मांग रहे हैं. तो these are how you generally approach tackling a judge in the civil court. अब the high court is completely opposite.
in my experience. In the High Court, the judge will be super attentive and most likely he'll be very combative as well. So it's not so much as you presenting a case as so much as you just answering questions. And because they're in a rush, and also because there is a sense of them being a little bit more egotistical, for lack of a word. They're basically they will have higher egos. So it's very important, one, to mentally prepare yourself that the judge will be rude to you. I mean, go with this preparation. The judge will be rude to you. The judge will interrupt you constantly, and for you not to lose your cool or not to be shaken by any questions. You should know your case inside out, and it will just be you answering questions of the judge. Acha, ye case hai. For example, let's just say, I'm not saying in the airline case will go to the High Court. अच्छा, कब आपने बोर्ड किया था? आपने कब फाइंड when did you find out कि you lost your luggage? अच्छा, ये केस तो बनता ही नहीं है। ये तो आप एयरलाइंस को सू नहीं कर सकते। Basically, have every potential I have an answer to every potential question you can think of that the judge will ask. Most of the time, I've seen that the judge will throw a question at you that you did not prepare for. That is why you should still try to prepare your case inside out, and you should know your case with such confidence that if there's any odd question that is thrown your way, आप उसको जरूर उसको एक आंसर कर सकते हैं. But it's very important कि आप रैटल ना हो जाएं. एक तो आप डर ना जाएं, you keep your calm composure, और आप गुस्से ना हो. Yeah, because if you any of those two things happen, the judge will most likely deny your request. तो आप it's more in a high court, it's more of a conversation. वो आपसे सवाल constantly throw करेंगे और आप बस जवाब दे रहे हैं. But आपको जवाब होने चाहिए. That's why if you go unprepared in a high court, the chances of you tripping या आपको वहाँ humiliate ज़्यादा chances हो जाते हैं. And most of the time this happens कि उनका they're not that patient, वो आपको सही तरह से नहीं सुनने देंगे, and you constantly have to get your point across in the smallest amount of words possible. तो वही pyramid structure, वो कहेंगे अच्छा आप क्या मांग रहे हैं? You start off with your request. This is what we came here for. Why? This is what this is our grievance. आपकी grievance is it supported by any law? You cite the law, you give precedent, and you slowly build up. You don't try to go into long speeches. Just make it a quick, I'm here for this, please give me this. Be very economical in the use of your words and the use of your time. आपको time आप समझे कि बिल्कुल नहीं मिलेगा in the High Court. You have a few minutes to maybe argue extremely complex cases, and you don't have that much time to do it, or space. वो आपको ज़्यादा judge interrupt ही कर रहा होगा. So you need to use as many short sentences and short you just give even one word answers, but always answer the question. काफी दफा if a judge एक सवाल पूछ देगा that you don't feel comfortable answering, or you think कि हमारे मेरे केस के खिलाफ जाएगा, but you know the answer to. Always answer the question. Judges बहुत frustrate होते हैं जब आप एक सवाल का जवाब नहीं देते और आप उसे वेट करने की कोशिश करते हैं. वो फिर कहते हैं अच्छा नहीं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बस थैंक यू वेरी मच. Always answer the question. That is why it's very important which I go back to the first phase of my of the case preparation, that you get every single piece of information out of the client. काफी दफा ये होता है कि you feel like that's not relevant, or you don't get information, or the client has not given you all the information, and then you're caught uh, blank faced saying I don't know have the answer to it. Sana, if you don't know the answer, it depends. If you feel like you're seeing a few seconds to find collect your thoughts and give the answer, then be like fine, but be honest with it. For example, अगर आप कहेंगे जज पूछता है अच्छा आपके लगेज में कितने आइटम्स थे, and you don't know the answer to that, and be like I'm sorry, I don't know the
exact number of items in my baggage, but I would like to emphasize that the issue is not so much as uh, how many items I lost, it's that the airline lost them. Things like that. You should try to first answer the question ki, yes, I do not have that answer with you. I can confer with my client if it's very necessary, but I would like to go back to my original case. So I try to first answer the question, be like that you don't know the answer, and then try to pivot back to your own case. It's not ideal, obviously, कि अगर आपको जवाब नहीं आता, but instead of giving एक तो evading the question or giving a wrong answer, it's always better to be more honest with the judge. Does that answer your question, Sana? Um, so generally, these are the overall pointers in terms of preparing a case. If anyone has any, obviously I skipped over a lot because, like I said, this is not something that you can squeeze into one seminar. These are generally just pointers that I have from my experience uh, practicing law in Pakistan. And does anyone else have any questions? I don't think there are any other questions. Hello, can I ask a question? Yes. So, thank you for the presentation. It was very helpful, particularly the airline case that you mentioned. I want to ask what happens in a situation where the client wants to settle, but you think that the claimant has a weak case and you want to fight it? Okay, so that's a good question. You can give your आप अपना opinion जरूर दे दें उन्हें कि देखें आप सेटल करना चाह रहे हैं बट आई थिंक आपके पास एक गुड केस है आपकी इंटरेस्ट में नहीं है कि आप सॉरी आपके आई बिलीव कि आप लड़ सकते हैं मगर आप लेट द क्लाइंट मेक द डिसीजन आप अगर आपको फोर्स करें your opinion on the client, one, it can backfire on you. In this particular example that you cited, कि what if you don't win? Then वो settlement में आपको कुछ मिल रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा, and you also lost the case. Because you, like I said, कोई 100% guarantee नहीं होती for you to win a case. In a court, कुछ भी हो सकता है. You can lose, you can win. Like you can have a mixed bag of results. In a settlement, you have a control over what the outcome will be, and also the case gets finished. So it's very important that there's no clear right and wrong answer. If they want to settle, and if they and if you feel like you want to continue the case, मैं flip कर देता हूँ. ये भी हो सकता है the client says आप लड़ें, आपने तो खुद बोला था आपका केस बहुत स्ट्रांग है, मगर आप क्यों वकील कह रहा है कि आप सेटल करें. I think that you first of all you say कि मेरा ओपिनियन है. देखें आपके पास बहुत स्ट्रांग केस मगर ये केसेस बहुत देर लगाते हैं. कुछ भी हो सकता है, जज ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपकी एविडेंस मुकम्मल नहीं होगी, थिंग्स लाइक दैट. और अगर डिक्री मिल भी जाए आपके फेवर में, वो अपील करेंगे, वो से आगे तो कोई काफी देर तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे. तो बेहतर नहीं है कि आप एक इंस्टेड ऑफ 10 साल बाद आपको फुल अमाउंट शायद मिले, बेहतर नहीं है कि उसके हाफ अमाउंट अभी मिल जाए, थिंग्स लाइक दैट. तो दिस वाज टेकिंग इनटू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. लाइक आई सेड, देयर इज अ डिफरेंस between what the law says and precedent says and the real world. So it's always a good lawyer knows the how to balance the two. For example, let's just say एक और केस में
your client is a school and a private school, and you have complete discretion as to कि आप कौन से students को अंदर दाखिला दे सकते हैं या नहीं. Let's just say you kick out one student because for whatever reason that you don't like them. वो आपके कोई you have an issue with their parents, personal issue with their parents, and you say कि I want to kick this child out. Let's just say, hypothetically speaking, because you are a private school, you have absolutely, legally speaking, you have the complete right to do that. Magar, a good lawyer would also say, would not say, हाँ हाँ आपका right है, आप वो कोर्ट में जाएं देख लेंगे. You also know you have to give an advice to the client क्या what the optics will look like. कोर्ट पे जज कहेगा आपने एक मासूम बच्चे को इस तरह निकाल के आपको पसंद नहीं है, ये किस तरह के आप स्कूल हैं? Legally speaking, he doesn't have the right to ask you that question. But that's the reality of courts here, that you have to perceive how will it be looking like into the outside world, because उस तरह वो judge शायद उसे question करेगा. A lot of times we have to take the practical considerations. We have to take the practical aspects into consideration, even when drafting a contract. आप अपने क्लाइंट को दे देंगे कंप्लीटली वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, उसके फेवर में आप उसे एडवाइस, ये देखिए मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है, आप प्रेजेंट करें, दूसरी साइड को देखी जाएगी. दूसरी साइड कहती है दिस इज कंप्लीटली नॉट साइनिंग दिस. Now, legally speaking, you've not advised on anything wrong, but you also want to keep the client's interests. You want to prioritize the client's interests. Okay? You want to give a contract to the side protects your interests, but the other side doesn't feel it's too harsh that they won't sign it, and then thereby causing harm to your depriving any benefit to your client. So you always give realistic advice. So even for example, in the airline case, let's just say your client says कि नहीं 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 हम we should also के वो बड़े इंसान हैं, और ये अरब एयरलाइंस हमारी वो advice to the client saying कि look, I understand legally speaking you can do what you're doing, but I advise you not to. A lawyer knows the difference. Do not try to force the client to go along with what you want. If the client is choosing a legally permissible option, let the client do that. They should take ownership of it. You are going to do what the client wants you to do ultimately. And be like, देखिए मैंने आपको advice किया, आगे आपकी मर्जी है, let the client do it. Because sometimes the client would know better, because they would know the more practical realities of what they're doing as opposed to you. Sometimes, I'm not saying all the time, but I'm just saying give them that due deference in that they may know what they're doing. Uh, Habib, like I said, yeah, a lot of lawyers say, they do give 100% guarantees, but you try to satisfy the client to the best of your abilities by saying, देखें, you have a very strong case, but you can never give their 100% guarantee. Because let's just say, let me just put it this way, the risk of you losing that case, the negative consequences of you losing that case far outweigh any potential benefits of you easily winning that case. And my experience, कोई केस ना आसानी से कोई नहीं जीतता, कोई ना कोई मुश्किलात जरूर आती हैं. And especially for young lawyers who have trying to fight a case honestly, उनको जरूर मुश्किलात आती हैं, उनको धक्के बहुत लगते हैं,
and only after a lot of effort would a clear-cut case be जीतते हैं. For example, in my experience, even though I've worked with big firms, हमने काफी ludicrous cases हमारे clients के खिलाफ हुए हैं. And without any evidence, without any basis, and 10 साल वो हमारे सर पे सवार होते रहे for one reason or the other. Lawyer उनके साथ शो अप नहीं कर रहा, वो आर्ग्यू नहीं कर रहा, बट हम केस डिसमिस नहीं कर पा रहे for one reason or the other. तो एंड काफी क्लाइंट्स उस पे फ्रस्ट्रेट होते हैं because they don't understand some the complexities of our legal system. और वो बस नहीं वकील ही खराब है, बाकी इतना आसान सा केस तो है, क्यों नहीं जीत पा रहा. ओके, तो बहुत जरूरी होता है आप क्लाइंट को समझा दें कि हमारा लीगल सिस्टम किस तरह काम करता है और उसमें क्या इश्यूज हैं. आई मीन को जनरली तो आइडिया होता है, मगर आप ही उनको समझाएं कि देखें बहुत अच्छा केस है, इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे, मगर मैं नहीं गारंटी दे सकता. क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे हो, और मैं कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं नहीं करने दूंगा कोई आपकी केस खराबी, बट काफी चीजें हैं जो मेरे हाथों से बाहर. एंड आई थिंक देर आर चांसेस कि आप ये क्लाइंट लूज करेंगे, बट जो आप क्लाइंट गेन करेंगे ना, I think the benefit of that outweighs any potential risk of you losing a client. और जो client जो बस आंखें बंद करके बस आप ये करें, it's probably good that you lose that client anyways, because you won't be able to develop a long-term relationship with that client. You need a client who can be reasonable as well, who will constantly come back to you, and you can have a healthy relationship with as well. हाँ, बहुत दफा होता है कि वकील के पास कोई आते हैं कि बस आप कर लें, कुछ ना कुछ कर लें, and those are the kind of lawyers who usually have other ways of getting results which are not legal. So it's best to, my advice is best to avoid such clients who are not willing to understand you cannot give 100% guarantee. Muhammad Iqbal, how to effectively prepare pleadings? I mean, मैंने अभी वो टिप्स तो ऐसा दी तो हैं कि basically you visualize your arguments, and जो normally एक pleadings होती हैं कि you start off, the first line is कि ये मेरा issue है, ये मैं claim कर रहा हूँ. Then you go on to the facts. This is my style of writing. You briefly describe the facts, in as much detail as you can, and describe the facts. Don't get into any unnecessary details. जो आपके cases relevant है, details वो factuals बताएं, facts बताएं, and then you state your legal grounds. Okay, on the basis of this law and so, I believe that I have this case, and then in the end you have your prayer clause. Generally speaking, I think that's should be the pattern that's good. And don't try to mix the two. The facts and the law should be in separate sections of the pleadings. Any other questions? Minam, I wanted to ask something, and just get your thoughts on this. In terms of if you have a case and you've accepted the case, you're now listening, and you're about to draft the writ, and you're about to go through in whatever stage of proceedings you are, and you gradually find out more and more disclosure from the client, and it's very different from what was originally disclosed to you, and you find out further shadier and shadier things. How do you go about handling that with the client, in the sense of, that they're either in the fact that they're not giving you the full information and trying to get more information out of them, or the fact that actually when you get down to the bare bones, it's a very different case from the one you'd agreed to take on? That has happened a lot in my experience. Okay. I know the first knee-jerk reaction is that you say, if let's say you're talking to a friend, you say, you lied to me. I can't
trust you anymore. What were you trying to do? So that's the immediate human reaction to say if someone has been misleading you or lying to you. I think for us, for lawyers, and like I said, anyone in the service industry, the approach should be slightly different. Well, not slightly, very different. You should be like, look, you've given me this information. I've gotten this now, and this is the picture I'm getting. This will not be good for you in this case, and we need to do this. So you're not so much as accusing them, you're so much also giving them rectification opportunity, saying that, look, this is incomplete or this is contradicts this. And if the judge finds this out, this will be bad for you. Therefore, please tell me how we should proceed. Always leave it up to them, saying, look, you're trying to help them. That should be the general approach, that you're saying, I'm helping you, quoting from a famous movie, help me help you. Okay, if we don't do this right, this will be bad for you. We need to do this this way in order to get the result that you want. And that's the tone I would use, and we have used, that we're trying to say, look, we're trying to help you. They should get this impression that we're not trying to accuse them of anything. We're trying to help them, that we are on your side, and we need to do this to get this right. Otherwise, this will be bad for you for this reason. So that's the approach generally I would adopt. Yes, I know the fear is that the client will be like, oh, then I'll just take this to another lawyer. I mean, if there are certain clients, and I have experienced those as well, it's better that you let them go. I know it's not good business sense to say that, but after you try to explain, after you've done this approach, that you try to explain to them, like, look, I'm trying to help you, there's nothing more that you can do. And if they try to still push back, be like, look, I'm sorry, I'm trying to help you, but unless I have this, I will not be able to successfully argue on your behalf. And then you take a step back. And as long as your tone is not very hostile or accusatory, they will tend to come back to you. I mean, I think this comes with practice. You join a law firm, you'll just generally understand the way they do pleadings and the way they draft them. So I would not say that you have to take on paid courses for legal drafting, because every law firm has its different style, and this is something you inevitably learn on the job, so to speak. So yeah, even if you, let's say, take one course on it, the different law firm will have a very different style of writing. So it's very important that before you develop your own distinct style of writing, that you tend to adapt the law firms where you're working, their style of writing. That in all the different law firms I've worked at, all of them have very different styles of writing. Before I came to the conclusion, okay, this is the common traits of all of them, and it's the best thing and the best features of all pleadings, styles of pleadings that I've come across. So yeah, I would not suggest you take on any paid courses for pleading, drafting pleadings. Any other questions? I think if that's all of the questions, thank you so much. This is actually such an enlightening hour, and I really, really enjoyed listening to all of your advice and all of your stories. And thank you to everyone who tuned in at home. I know that there is so much going on today. So to take the time out to attend this workshop, thank you so much. And we'll be in touch for any future workshops we have of a similar nature.